तो हम खुद परेशान हैं तमाम कोर्ट में। ये काबिल गौर अमल है, सेमिनार करा लें, संपोजियम करा लें, जो कराना वो कराते रहें, लेकिन इस अमर पर गौर करने की जरूरत है, इस बारीकी पर कि ये झगड़े जो 90% हमारे घर के हैं, हमारे सहन के हैं, हमारे खानदान के हैं, आखिर ये हल कैसे होंगे? आखिर इससे क्या मैसेज जा रहा है मुल्क में? इन चीजों पर भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे मसाइल को हल फरमाएंगे। हुकूमत की बदनीयती और बुनियादी हुकूक की जहां तक बात है, ये कशमकश शुरू से चलती रही है, चलती रहेगी, देखेंगे इसको क्या मसला है। पहले हम अपना घर तो ठीक कर लें, वो तो सिलसिला चलता रहेगा। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक व बातिल की कशमकश तो चलती रहेगी, सतेजा तार रहा है अज़ल से कायम रोज, चराग़ मुस्तफ़ी से शरारे बुलंदी, हमें उसकी फिक्र नहीं है। फिक्र ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे घरों के झगड़े उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। ये काम बगैर इत्तेहाद के और बगैर यकजहती के नहीं हो सकता। मुस्लिम फैसला बोर्ड ने जिन जिन चीज़ों में कामयाबी हासिल की, पूरे मुल्क के हर मसलक के लोगों को एक जगह जमा करके किया, उसमें भी सिंध मारने की कोशिशें की जा रही है। अगर आप गवाह को खरीदे जाने की कोशिश की जा रही तो क्या मसला हुआ? यहाँ तो हम बिक रहे हैं और आप गवाह की बात कर रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा, इससे परेशान नहीं होना, हरासा नहीं होना है। अपनी उम्मत को आप दिल को मत तोड़िए, उनके हौसला को बढ़ाइए, काम करते जाना है इत्तेहाद के साथ। दारुल क़ज़ा कायम होना चाहिए ताकि मुसलमान शरीयत पे अमल करें और हक लेने की सलाहियत होनी चाहिए। बड़ी अच्छी तजवीज़ हज़रत मुफ्ती साहब रख के चले गए कि हर जिले में एक कमेटी बने, तुज्जार की, उलमा की और वकला की, जो कमेटी जिले में होने वाले नाइंसाफियों और जुल्म पर नजर रख करके उन मजलूम मुसलमान की मदद कर सके। अल्लाह ताला इस जलसे को दूरस बनाए और पूरे गुजरात में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए अल्लाह ताला इसकी इफादियत को आम ताम फरमा दे। हज़रत मुफ्ती साहब के सेहत में अल्लाह ताला बरकत दे, उनकी उम्र में बरकत दे कि ये जो इन्होंने बेड़ा उठाया है, मुझे लगता है कि जैसे हांसोट के जामिया की चमक दमक पूरी दुनिया में है, इंशाअल्लाह अगर ऐसे बुजुर्गान हमारे ठान लेंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। और यूँ समझ लें कि नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। सेमिनाરની અંદર હાજર રહેવા બદલ તમામ હાજરજનોને દરેકનું અલગ અલગ નામ લઈશ તો કદાચ હવે સમય પરવાનગી નથી આપતો, એટલા માટે હું દરેકનું અલગ અલગ નામ લેવાની ગુસ્તાખી નહીં કરું, પણ તમામ હાજરજનોએ અહીં હાજરી આપી અને સેમિનારને સફળ બનાવ્યો। ખાસ કરીને આ પ્રોગ્રામ વકીલ મિત્રો અને સમાજના આગેવાનો વચ્ચેના કોર્ડિનેશન માટે એટલે સંકલન માટેનો વિચાર વિનિમયનો પ્રોગ્રામ હતો। વસ્તુ ફક્ત અને ફક્ત એક મુદ્દાનો કાર્યક્રમ એ હતો કે આપણે દરેકે પોતપોતાના વિસ્તારમાં જઈને કાર્ય કરવાનું છે અને એ કાર્ય કરવા માટે આપણે અહીં હાજર વક્તાઓને સાંભળેલા છે। આ કાર્યક્રમ કોઈની વ્યક્તિગત પ્રશ્નોની વાત કરો તો દાખલા તરીકે મને કોઈ મારો પર્સનલ પ્રશ્ન હોય અને હું અહીં મૂકું અને એનું નિરાકરણનો એ કાર્યક્રમ હતો નહીં। એટલે એવા ઘણા બધા જે પ્રશ્નો મારી સામે આવ્યા હતા ચિઠ્ઠીમાં લખીને, એના તમામનો હું મારું ફરજ સમજું છું કે એક રીતિમાં જવાબ આપું કે આપણે આપણા વિસ્તારમાં જઈ અને ટીમ બનાવીને કામ કઈ રીતે કરવું એના માટે ફક્ત મંતવ્યો જાણવા માટેનો આપણો પ્રોગ્રામ હતો। ઘણા બધા વકીલ મિત્રો ના ઘણા ઉમદા મંતવ્યો અહીં રજૂ કરવા જોઈએ, પરંતુ ટ્રાફિકની સમસ્યાને કારણે આપણો પ્રોગ્રામ લગભગ 1 કલાક મોડો ચાલુ થયો, એટલે એ બધા પ્રશ્નોનો કાળ પણ આપણને બહુ ઓછો મળેલો છે। એટલે તમામના જે મંતવ્યો રજૂ થવા જોઈએ નથી થઈ શક્યા, એ માટે પણ હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું। આપ સાહેબો અમારા સમસ્યાઓને જોઈને એના માટે અમને દુર્ગુજર કરશો અને આ તકે તમામ હાજરજનોનો હું શહાદત રિલીફ કમિટી વતી અને શહાદત રિલીફ કમિટીના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ હઝરત મુફ્તી સાહેબ વતી અને તમામ સ્ટાફ વતી અને જામિયા મસ્જિદ શહાદત હાંસોટ વતી અને હાંસોટના ગ્રામજનો વતી અને તમામ કાર્યકરો વતી આપ તમામ લોકોનો હું આભાર માનું છું। અને આપ તમામ લોકો અહીં પધારીને જે રીતે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં સહભાગી થયા, અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તમામને એનો બહેતરીન બદલો અતા ફરમાવે અને કાર્યક્રમમાં જે હેતુઓ માટે ચર્ચા થઈ હેતુઓ દરેક પોતપોતાની જગ્યાએ સફળ કરવા માટે કામ કરે। આપ સાહેબ તમામનો આભાર। હવે હઝરત મુફ્તી સાહેબ દુઆ કરાવશે અને દુઆ કરાવવા પછી
પછી અહીં જ આપણે જમવા માટેની વ્યવસ્થા કરવાની છે, એટલે દરેકે પોતપોતાની ખૂબ જ આરામથી જગ્યાઓ કદાચ છોડશે, કોઈ જાતનું વ્યવસ્થા ન બગડે એનો ખ્યાલ રાખજો. જઝાકલ્લાહ. محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما. اللهم إنا نسألك نزل الرحمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. مولا تو ہمارے گناہوں کی مغفرت کر. مولا ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، نابکار ہیں، اقراری مجرم ہیں. مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا. مولا کریم جب تک حیات مقدر ہے تو ہمیں ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما، اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ظالم بننے سے بھی حفاظت فرما اور مظلوم بننے سے بھی حفاظت فرما. مولا اتنا جامع اور مکمل دین آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ مولا جس دین کے ذریعے سے مولا کریم انصاف کی تعلیم لوگوں کو دے سکتے ہیں، اپنی زندگی کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. مولا ہم نے آپس میں اتحاد پیدا فرما، آپس میں اتفاق پیدا فرما. مولا کریم تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی ہے وہ بھلائیاں ہمیں بھی عطا فرما. مولا جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان تمام برائیوں سے پناہ نصیب فرما. مولا حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما. جن اکابرین علماء نے ہمارا تعاون فرمایا ہے مولا ان کو اجر جزیل عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کی نسلوں میں علماء ربانی پیدا فرما. جن حاضرین مجلس نے ہمارا تعاون کیا ہے مولا ان کو تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما. مولا کریم دین کے ایک ایک تقاضے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا یہ جو فکر تو نے عطا فرمایا، مولا یہ جو دین تو نے عطا فرمایا، مولا یہ علم دین کی برکت سے تو عطا فرمایا ہے. مولا کریم تو علم دین کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بھلائیاں مانگی وہ بھلائیاں عطا فرما. آپ کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. السلام علیکم.